टाइप्स ऑल्सो गूगल फोन्स में हम लोग इधर से कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल फोन लगाने के लिए. बट फर्स्ट वन थिंग, कॉमन फोन्स. बेसिक फोन टाइप, सॉरी, बेसिक फोन फैमिली ग्रुप्स. इसमें भी ज्यादा इतना डीप में जाने का जरूरत नहीं है. You just need to learn how to connect different types of phone families. MDN docs में भी अच्छे से दिया हुआ है. Basically you can add comma, sensory, monospace ना, monospace, perceive, sensory, fantasy, ठीक है. Okay, so let me create one HTML file. Desktop, right click, new text document, font families .html. Open it, VS Code. ठीक है ना. आई विल क्रिएट द बेसिक HTML टेम्पलेट. HTML:5 सिंपली देने से तुम लोग को बेसिक HTML टेम्पलेट मिल जाएगा. फॉन्ट फैमिलीज, फैमिलीज से H1 फॉन्ट फैमिलीज. अभी हम लोग को बहुत सारे केसेस में डमी टेक्स्ट रिक्वायरमेंट होता है. हाँ, डमी टेक्स्ट. whenever we build a website we need dummy text content. basically real text content जब तुम लोग के पास अवेलेबल नहीं होता है, in that time we use dummy text content. so VS Code में हम लोग का dummy text क्रिएट करने के लिए बहुत इजी होता है. simply you have to type lorem and hit tab. okay, tab hit करने से dummy text मिल जाएगा. इसको मैं रैप करता हूँ, व्यू वर्ड रैप. तो ये नीचे आ गया. So this is some dummy text that I've added so that I can see different kinds of font family, whether it's applied or not. Okay. तो इसको मैं अभी ओपन करता हूँ. राइट क्लिक, ओपन विथ गूगल क्रोम. तो यू कैन सी दिस इज आवर डिफॉल्ट फॉन्ट. हाँ, डिफॉल्ट फॉन्ट हम लोग का क्या है, सेरिफ है. हाँ, सेरिफ. इट डिपेंड्स ऑन ब्राउजर बाय द वे. इट्स नॉट फिक्स दैट सेरिफ ही होगा. नाउ व्हाट इज सेरिफ, व्हाट इज सेंस सेरिफ, थोड़ा डिफरेंस रहता है. हाँ, देयर आर बेसिकली 4 फॉन्ट टाइप्स. ओके, 4 नहीं, 3 और 4. ओके, लेकिन बेसिक डिफरेंसेस क्या होता है, मतलब बेसिक ग्रुप्स होता है फॉन्ट का. ओके, जो जो हम लोग का फॉन्ट फैमिली है, बेसिकली fonts.google.com में हम लोग को बहुत सारा फॉन्ट मिलता है. हाँ, fonts.google.com. so this is a website from where you can download fonts. You can use external fonts. ठीक है, there are hundreds of fonts that you can use here. हाँ, cursive font, ठीक है, अलग अलग टाइप का फॉन्ट है, जैसे एरियल, फर्डाना, ऐसा अलग अलग नाम रहता है फॉन्ट का. सो यू कैन यूज देम इन योर वेबसाइट. ठीक है, फ्रॉम गूगल फॉन्ट्स. सब वेबसाइट का अलग अलग फॉन्ट होता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन ऑफ द वेबसाइट एंड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. अलग अलग क्लाइंट को अलग अलग फॉन्ट्स पसंद होता है. हाँ, ठीक है. तो यू हैव टू चेक विच फॉन्ट मैचेस द डिजाइन ऑफ द वेबसाइट and based on that you can use the font, whichever font you like. So if you come to fonts.google.com, so here you will get the list of all the fonts. So we can get we can connect external fonts from fonts.google.com. Now ये जो अलग अलग fonts है ना, they are categorized into few basic groups. Okay, they are categorized into few basic groups or basic types. So serif and sans serif, cursive ऐसा होता है हम लोग का. So first I will tell you what is serif and sans serif. Okay, these two are the most popular font types. Okay, you just need to know some basic differences. तो ये जो अलग अलग font है ना, roboto, alcatra, open sans, तो ये सब, this all will fall under few basic font types. Okay, few basic categories. So you have to know the difference between serif and sans serif. So this is the difference. Left side is the serif font and the right side is the sans serif font. serif font में क्या होता है, on the edges, ठीक है, edges and corners, उसमें थोड़ा ये डेंट जैसा रहता है, मतलब थोड़ा एक्सटर्नल ये रहता है. हाँ, थोड़ा लाइन्स या स्ट्रोक्स एक्स्ट्रा ये आ जाता है on the edges and on the corners. So this kind of fonts are serif font. Okay, they come under the category of serif. ठीक है, बेसिकली these are used in newspapers. Okay, वो सब में यूज करते हैं. एंड ये सेकेंड वाला टाइप है sans serif font. In sans serif there is no external stroke like this. Okay, in the edges, corners, उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा स्ट्रोक निकल के नहीं आता है. It is plain. Okay, plain. They have even width. ठीक है.
तो इसका जो width है, width of all the strokes they are even, but in sans serif sorry in serif you can see कहीं पर width भी थोड़ा thin होता है, कहीं पर थोड़ा thick है, like this. Okay, but in serif font it's even and there are no external uh, this edges or strokes. ठीक है, so you can see other examples. So this is serif font, नहीं नहीं इसमें इसमें wrong हुआ है. This is serif, this is serif and this is sans serif. So here you can also see sans serif is like this and serif is even on the right side. ठीक है, so this is the basic difference. Let me send this. Save image as font type. So serif और sans serif ये तो क्लियर हो गया ना, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है. टाइप, ये टाइप है बेसिकली. दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फॉन्ट नेम. ओके, ये फॉन्ट का नाम नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ फॉन्ट. ओके, इट इज अ टाइप ऑफ फॉन्ट. टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स, कॉमन टाइप्स बेसिकली, कॉमन टाइप्स. तो ये दो टाइप तो समझ गए ना, सेरिफ, एसीआर सेरिफ, sans सेरिफ. फिर हम लोग का है कर्सिव, CURSIV, कर्सिव. ठीक है, फिर मोनोस्पेस रहता है. कर्सिव फॉन्ट क्या होता है? इट्स कर्सिव, इट्स एज इफ इट्स रिटन बाय हैंड. ओके, कर्सिव फॉन्ट. तो जो जो फॉन्ट कर्सिव होता है, इट्स नॉट सिस्टमेटिक. ओके, इट्स नॉट लाइक, इट्स नॉट फिक्स्ड. इसका स्टाइल्स देख सकते हो, इट्स लाइक एज इफ इट्स रिटन बाय अ ह्यूमन. ओके, एज इफ इट्स रिटन बाय हैंड. तो ये सब जो फॉन्ट होता है ना, वो सब कर्सिव फॉन्ट में आता है. ओके, कर्सिव, इन लोग का कैटेगरी कर्सिव में आता है. सो दिस इज नॉट sans serif, दिस इज नॉट serif, दिस इज कर्सिव फॉन्ट. ठीक है, द टाइप इज कर्सिव. That's it. So cursive font, just you can think like it's written by a human, like that, similar. ठीक है, उसमें बहुत सारा कर्व रहता है. ठीक, cursive font. So if we check some example, example this one, ये जो इसका नाम क्या है, delicious hand drawn. So this is the example of a cursive font. ठीक है, this is the example of cursive font. These are basically font types. Okay, font common types of font families. So serif, sans serif हो गया, फिर cursive, फिर मोनोस्पेस. मोनोस्पेस फॉन्ट, इसमें तो एक चीज होता है मोनोस्पेस. लेट मी शो द इमेज. उसमें इक्वल विथ होता है. हाँ, ईच ऑफ द कैरेक्टर्स दे हैव इक्वल विथ. मोनोस्पेस, मोनोस्पेस्ड, मोनोस्पेस्ड. ठीक है, सो इन मोनोस्पेस्ड फॉन्ट इट इज समथिंग लाइक दिस. ओके, इट इज समथिंग लाइक दिस, मोनोस्पेस्ड फॉन्ट. ठीक है, इसमें एवरी सिंगल कैरेक्टर इक्वल विथ होता है, जैसे बी का विथ एंड आई का विथ, सी के, ऑल दिस कैरेक्टर्स दे हैव इवन विथ. Okay, that is monospace. So all characters have even width. Characters look like they are drawn by hand. ठीक है, and serif, sans serif में क्या होता है? All characters are plain and simple. फिर serif वाला, serif is all characters, या फिर most characters have some extra strokes at the edges or corners. फिर इम्पैक्ट बोल के भी एक है बेसिकली. इम्पैक्ट, इम्पैक्ट है कि नहीं, 1 minute. ओके, इट्स नॉट देयर, यू कैन इग्नोर दिस. अच्छा, फैंटेसी, फैंटेसी बोल के एक और टाइप है. ओके, फैंटेसी. सो फैंटेसी फॉन्ट इज वन मोर टाइप. Fantasy fonts are like this. They are very bold. They are very strong. They basically stand out. Okay, fantasy font. So you can say they belong to the fantasy group. Fantasy को भी मैं डाल देता हूँ. Fantasy. They are bold and strong and they stand out. So these are common types of font families. ठीक है, these are common types of font families. These are not font family names, by the way. Font family तुम लोग का अलग अलग नेम है, but they will fall under one of these categories. ठीक है. So first you have to know what are the common types of font families. Difference between serif, sans serif, cursive, monospace. ठीक है. So cursive font also I can download some images. इसमें तो confusion नहीं है ना, क्वेश्चन नहीं है. ब्रो सेरिफ और सेंसर पे थोड़ा सा मेरे को डाउट था. मतलब आई डिडंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट स्टैंड्स देम अपार्ट, यू नो, डिफरेंस वाला.
और हाँ वो उसमें थोड़ा साइड्स में, बेसिक कॉर्नर्स में, लाइक हाँ सेंस हाँ। सेंस सेरिफ में कुछ ऐसा एजेस में ऐसा नहीं रहता है, लाइक वैसा लाइंस वैसा नहीं नहीं आता है। लेकिन सेरिफ में ऐसा कॉर्नर्स में थोड़ा ये स्ट्रोक्स आए दिखाई देगा तुम्हें। हाँ, एग्जाम्पल हम लोग ने बहुत एग्जाम्पल देखा सेरिफ, फिर से थोड़ा मैं दिखाता हूँ। पुराना पुराना जमाना का टाइप का, जैसे वो हम्म, लोग लिखता था ना पहले हाँ शरीफ पे। सेरिफ, हाँ सेरिफ में बेसिकली कॉर्नर्स में ऐसा रहता है, थोड़ा स्टाइलिश ऐसा ओके। स्टफ रहता है। हाँ देखो, सेरिफ एग्जाम्पल, और और सेंस उसमें सेरिफ नहीं हम लोग का रहता, और सैन सैन में नहीं रहता है। सेंस में नहीं रहते, हाँ सेंस सेरिफ में नहीं रहता है। सैन इज लाइक वेरी बेसिक। हाँ, यू कैन से इट्स वेरी प्लेन, स्ट्रेट, मतलब ये वाला। एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स नहीं है उसका, लेटर्स हाँ, में उसमें वगैरह ऐसा वगैरह। स्टाइल्स वैसा और नहीं है कॉर्नर्स में जो एक्स्ट्रा पार्ट्स आ जाता है। सेंस सेरिफ में फुली मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेरिफ वर्सेस सेंस सेरिफ। जैसे हम यू लोग कैन, का नॉर्मल वेबसाइट में हम लोग क्या यूज करते हैं, सैंस। नहीं दोनों यूज होता है एक्चुअली, ये डिपेंड होता है। मतलब हाँ नॉर्मली तो अच्छा सेंस सेरिफ है शायद ब्राउजर का डिफॉल्ट फॉन्ट। तो ये कंपेयर करके देखो, ऊपर वाला सेरिफ है, नीचे वाला सेंस सेंस सेरिफ है। काइंड ऑफ अंडरस्टैंड। हाँ, तो सेरिफ में ना थोड़ा एक्स्ट्रा सीरियल का एक्स्ट्रा वो एल। पार्ट्स आता है, तो थोड़ा हाँ थोड़ा क्राउडेड भी लगता है सेरिफ को। सो इट डिपेंड्स तुम कैसा देना चाहते हो। उसमें कुछ रूल्स था, लाइक इफ यू हैव लॉन्ग टेक्स्ट तो शायद सेंस ज्यादा अच्छा होता है, सेरिफ एग्जैक्टली मैं भूल गया, बट ऐसा थोड़ा टिप्स था, मतलब विच फॉन्ट टू यूज, राइट फॉन्ट, ओके, बेस्ड ऑन कंटेंट, लेंथ ऑफ द कंटेंट। तो न्यूज़पेपर में भी दिखाई देता है, आई थिंक सेरिफ को ही न्यूज़पेपर में यूज होता है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली बट हाँ, न्यूज़पेपर में सेरिफ यूज होता है। हाँ। सो दिस आर बेसिक कैटेगरी ऑफ फॉन्ट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो कर्सिव, सैंस सेरिफ, सेरिफ, मोनोस्पेस, फैंटेसी। तो जो जो तुम लोग इधर गूगल फॉन्ट से लगाओगे एक्सटर्नल फॉन्ट्स, दे विल फॉल अंडर वन ऑफ दिस कैटेगरीज। हाँ, ये सब फॉन्ट कैटेगरी में गिरेगा। एग्जांपल ये कर्सिव फॉन्ट है, तो कर्सिव फॉन्ट का तो बहुत सारा स्टाइल पॉसिबल है, डिपेंड्स ऑन विच कर्सिव फॉन्ट यू आर एडिंग टू योर वेबसाइट। तो इसको मैं पहले लगा देता हूँ। Now after understanding this, we will add this. Now we will learn how you can change the font family in your website. तो अभी हम लोग HTML फाइल में जाएंगे, दिस इज आवर HTML फाइल ना। अभी डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली क्या है हम लोग को भी नहीं पता, वी हैव टू चेक। जैसे क्रोम डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली, इट मे आल्सो डिपेंड ऑन योर सिस्टम। क्रोम डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली का नाम आ जाएगा शायद। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली, मे बी टाइम्स न्यू रोमन भी हो सकता है। हाँ, वी डोंट नो, बट डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली को देखो, इट्स सैंस सेरिफ, देख के ही बता सकते हो इट्स सैंस सेरिफ, बिकॉज यू कैन सी देयर आर एक्स्ट्रा पार्ट्स एट द एजेस ऑफ द फॉन्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स आर अवेलेबल, सो दिस इज अ सैंस सेरिफ फॉन्ट। सो इफ यू वांट टू मेक सेरिफ फॉन्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिंपली, मैं दिखा रहा हूँ, नाउ लेट अस यूज इंटरनल स्टाइल शीट लाइक दिस टू चेंज द फॉन्ट फैमिली। इसके बाद हम लोग सपोज पी टैग का फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हैं, ओके, इनसाइड दिस पैराग्राफ टैग। सो आई विल सिंपली यूज पी सिलेक्टर। I'm not using any class selector for now. If you want to do it for the whole body, then you can use body selector. I'm just using P so that we can see the difference. Now you have to use the font family property. ठीक है, अभी property का नाम है font family. Now इधर font family में if we are adding some external font, if we are adding some external font, तो हम लोग इधर specific font family का name भी specify कर सकते हैं, और we can also specify the name of this one. We can also specify the name of एक फॉन्ट फैमिली टाइप, ओके। ये फॉन्ट फैमिली का जो टाइप है उसका नाम भी हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, इफ यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक फॉन्ट नेम। सपोज हम लोग अगर सेरिफ करेंगे, विच इज बाय डिफॉल्ट सेरिफ ही रहता है, सो वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द फॉन्ट फैमिली टाइप नेम। दिस इज नॉट द नेम ऑफ फॉन्ट फैमिली, ओके, दिस इज द नेम ऑफ हाँ, फॉन्ट कपड़ा आ चुका है। फॉन्ट फैमिली ओ सॉरी। कैटेगरी। हाँ हाँ, ठीक है। अभी मैं रिलोड करता हूँ, यू कैन सी इट्स स्टिल द सेम बिकॉज बाय डिफॉल्ट सेरिफ ही था, बट इफ आई नाउ एड सेंस हाइफन सेरिफ, इसका वैल्यू है सेंस हाइफन सेरिफ, तो तुम देख सकते हो नीचे का क्या हो गया, सेंस सेरिफ फॉन्ट हो गया। नाउ यू कैन सी देयर इज नो एक्सटर्नल पीसेस एट द एजेस, ओके, एक्सटर्नल स्ट्रोक्स नहीं है बिकॉज दिस इज सेंस सेरिफ। बट H1 का हम लोग देख सकते हैं, इट इज स्टिल फॉन्ट फैमिली सेरिफ, ओके, H1 का। तो instead of specifying this specific font family name, we can also specify the font family category name, okay.
कॉमन टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ ग्रुप्स ऑफ फॉन्ट फैमिलीज। तो ये कैटेगरी नेम या ग्रुप नेम भी हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली कर्सिव लिख सकते हैं व्हेन वी राइट कर्सिव फॉन्ट फैमिली। तो इसमें फॉन्ट फैमिली क्या होगा, ऐसा कर्सिव हो जाएगा ये। सो दिस इज डिफॉल्ट कर्सिव फॉन्ट फैमिली। तो कौन सा कर्सिव फॉन्ट फैमिली पिक किया है उसको हम लोग को नहीं पता, बट द ब्राउजर विल ट्राई टू पिक अ डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली अवेलेबल ऑन योर सिस्टम। ओके, डिफॉल्ट कर्सिव पिक करेगा। सिमिलरली सैंस सेरिफ लिखने से किसी एक डिफॉल्ट सैंस सेरिफ टाइप का फॉन्ट फैमिली को पिक करेगा। सिमिलरली सेरिफ देने से इट विल पिक वन ऑफ द डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट फॉन्ट सेरिफ का एक उठा लेगा। ठीक है। हम लोग ने क्या क्या यूज किया, कर्सिव। फिर मोनोस्पेस, मोनोस्पेस। ओके, मोनोस्पेस लिखा मैंने, मोनोस्पेस। सो मोनोस्पेस में क्या होता है, सब कैरेक्टर्स इवन विथ होता है। तो ये एक मोनोस्पेस फॉन्ट है। सो दिस इज मोनोस्पेस फॉन्ट। इसको हम लोग को टर्मिनल्स, कंसोल या सीएमडी, कमांड प्रॉम्प्ट, ये सब में देखने को मिलता है। हाँ, मोनोस्पेस, दिस वन। सो दिस इज मोनोस्पेस फॉन्ट। इसको बेसिकली कंप्यूटर्स, ओल्ड कंप्यूटर्स में देखने को मिलता है, मोनोस्पेस फॉन्ट। दिस इज नॉट फॉन्ट फैमिली नेम। ओके, दिस इज अ फॉन्ट फैमिली टाइप। दिस इज टाइप। तो वन ऑफ द, आई थिंक इट्स यूजिंग कंसोलास। कंसोलास ना एक फॉन्ट फैमिली है, तो इट इज अ टाइप ऑफ मोनोस्पेस फॉन्ट। ठीक है। अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएंगे ना, उधर हम लोग को फुल लिस्ट मिल जाएगा ऑफ फॉन्ट फैमिलीज। सीरियस लिस्ट विल गेट। ओके, नाउ हम लोग का लास्ट एक और है, फैंटेसी, राइट। फैंटेसी टाइप, इसको हम फैंटेसी यूज। लेट अस चेक। हम लोग जब देखेंगे अलग अलग वेबसाइट, सब वेबसाइट्स में अपना कुछ ना कुछ अलग अलग फॉन्ट रहता है। एग्जांपल, अमेजन इज यूजिंग sans serif font. It is using sans serif font because sans serif is easy to read. There is no strain on the eyes. We can also check when to use serif versus sans serif. So we can also check like this. Sans serif is more traditional, huh? Roshan was right that it was used in more old text before, but there are some differences when to use. I think it's written or not. Somewhere I got एक मेरा book था उसमें था, but I forgot now. Now it depends on your preference. Whichever you like, you can use. But I think serif is easy to read, हाँ. Long text जब होता है serif को use करना चाहिए. But for short text you can use sans serif, maybe to grab some attention. एग्जाम्पल गूगल का लोगो देखो। पहले गूगल का लोगो में सैंस सेरिफ का डिजाइन था, देखा। दिस वाज द सैंस सेरिफ फॉन्ट बिफोर इन द गूगल लोगो डिजाइन। अभी गूगल ने क्या कर दिया, इसको सेरिफ कर, सॉरी सॉरी, पहले था सेरिफ, अभी कर दिया सैंस सेरिफ। ठीक है। इफ आई गो टू फ्लिपकार्ट, उसमें भी शायद सैंस सेरिफ ही होगा। सैंस सेरिफ इज मोर पॉपुलर नाउ। हाँ, इसमें भी सैंस सेरिफ है। ठीक है। और अगर मैं देखूंगा सम न्यूज़ वेबसाइट लाइक एनडीटीवी और समथिंग न्यूज़, एनडीटीवी, 1 मिनट, इसमें शायद न्यूज़ में शायद सेरिफ हो सकता है। आई एम नॉट श्योर। नहीं, इसमें भी सेरिफ ही यूज हुआ है, सेरिफ फॉन्ट। whenever you go to a website you can identify the font, huh? Whether it's sans serif or serif, but I think serif clearly looks better, much better compared to sans serif, huh? So we can include font in Google Fonts. उधर रेनिंग हो रहा है क्या, रेनिंग? अभी नहीं हो रहा है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, या फिर व्यूअर। So here we can include different font weights and font styles. এটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট, fonts.google.com। তো ইয়াতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমি যে চিলেক্ট কৰিছোঁ এক্সট্ৰা লাইট 200 এনেকুৱা চিলেক্ট কৰিছোঁ, ছাপ'জ আলকাট্ৰাটোৱে লৈ লোৱা। लेट मी रिमूव दिस। सो हियर हम लोग ने सिलेक्ट किया सिलेक्ट रेगुलर लाइक दिस, प्लस किया सिलेक्ट सेमी बोल्ड, ओके 600 ऐसा प्लस किया। देन वी एडिट दिस लिंक, ये ऊपर का दोनों लिंक फिक्स रहेगा। ठीक है। इफ यू आर नॉट एडिट देन यू कैन एड। फिर हम लोग ने ऐसा इंक्लूड किया। सो अभी देखो इसमें मैंने क्या क्या इंक्लूड किया, 400 एंड 600, 700 वो सब इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो समझ लो 600 को इंक्लूड नहीं किया। आई क्लिक माइनस अगेन,
इसको मैं विदाउट 600 में लिंक करता हूँ, सॉरी। तो आई जस्ट लिंक दिस फॉन्ट वेट 400, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, मैंने पीटेक में दिया अल्काट्रा सैंस सेरिफ, दैट्स फाइन। सो नाउ इफ आई ट्राई टू लोड, मैंने क्लोज कर देता हूँ, सॉरी, डेस्कटॉप फॉन्ट फैमिलीज ओपन विथ गूगल क्रोम, अल्काट्रा फॉन्ट तो आ रहा है, दैट्स फाइन। नाउ इफ आई ऐड फॉन्ट वेट बोल्ड, ओके, फॉन्ट वेट बोल्ड, तो देखो काम करेगा कि नहीं। ओके, इट्स वर्किंग, आई थिंक इट्स लोडिंग फ्रॉम 1 minute, इट्स लोडिंग बेसिकली। इसमें शायद सब फॉन्ट आ रहा है। 1 minute, रेगुलर 400, ठीक है, 500 में ऐड करता हूँ। आई एडेड 400 एंड 500 वेट, नॉर्मल। आई थिंक दिस इज नॉट गुड एग्जांपल। हाँ, मैं नानीटो में दिखाता हूँ। नानीटो में फॉन्ट 1 minute, नानीटो का 400 लगा के दिखाता हूँ। It's showing the link for Alcatra, I don't know why. Let me remove this. अच्छा, इसमें मैंने नानीटो टाइप किया, that's why. I have to search the Nanito font. Nanito Sans. सपोज इसको मैंने लिंक किया, हाँ, 200 वेट। फिर इसको मैं अल्काट्रा को, फॉन्ट फैमिली अल्काट्रा इसमें ले जाता हूँ H1 में। सो यू कैन सी दिस इज आवर फॉन्ट, ओके। अभी मैं इसमें ठीक है, इसमें मैं सेकेंड टाइप लगा देता हूँ। फिर फॉन्ट वेट बोल्ड, ओके। फॉन्ट वेट नॉर्मल है, इसमें मैं फॉन्ट वेट बोल्ड कर देता हूँ। तो यू कैन सी इट्स, ठीक है, थोड़ा तो बोल्ड आ रहा है, बट इट्स नॉट फुल्ली बोल्ड। हाँ, देखो फुल्ली बोल्ड नहीं आ रहा है। सो इफ आई कमेंट दिस, कमेंट करने से, बट थोड़ा, बहुत थोड़ा आ रहा है बोल्ड, इट्स नॉट फुल्ली बोल्ड। सो व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज वी हैव नॉट एडेड दिस बोल्ड, ओके। सिलेक्ट रेगुलर 400, ये बोल्ड जो है, फोन का अलग अलग वेट रहता है। सो इफ यू डोंट इंक्लूड दिस फोन वेट, दे विल नॉट कम, ओके। सो मेक श्योर विच एवर फोन वेट्स यू नीड, वो सब इंक्लूड करो। सो आई एडेड दिस, सो यू कैन सी हियर 200 और 600 मैंने बोल्ड ऐड किया है। नाउ इफ आई अपडेट द लिंक अगेन, अभी फोन विथ बोल्ड properly आ गया, देखो, it's now properly bold. So you can, you know, font weight can also be added as a numeric value, 100, 200 like this. You can add values like this till 800, okay. ऐसा 600 देने से ये 600 font weight का bold आ जाएगा. So if we add some font weight called 700, if we need somewhere font weight 800, then I will add this 800. लिंक को अपडेट करना मत भूलना. तो if I use somewhere font weight 800, तो मुझे वो 800 particular thickness को मिल जाएगा like this, हाँ. So if you want to use one of that font weights, you have to include them, okay. तो ये समझ में आ गया ना, why we need to include these values. So if you don't include that particular font weight, it will not be available. Similarly for italic, whenever you use font style italic, जब ये यूज करते हो ना, it must be available, okay. इसको इसमें भी italic के लिए ऐड करना पड़ता है किसी किसी फॉन्ट में. In this case it worked by the way, but if you want to be extra sure or if it is not working, then you will also have to add extra italic part also. Example, font weight 700 का ये normal हो गया, फिर font weight bold 700 के लिए italic part ये हो गया, ठीक है. So whenever you are combining these values, font weight, font family, then you have to add them, ठीक है. So I think people miss this part because you did not join. Okay, so this we basically discuss font family property using which you can change the family of the font. There are basically different types of categories of fonts you can add. Okay, serif, sans serif, cursive, monospace, fantasy. So these all are categories. All the fonts, they belong into one of these 5 categories. Okay, and you have to understand the main difference between serif and sans serif. Serif font में क्या होता है, edges में, corners में थोड़ा ये bumps है, ठीक है, थोड़ा ये parts रहता है, strokes. But in sans serif it's very plain. Then from fonts.google.com we can add external fonts. We simply have to search the font we like, then click plus,
buttons here. फिर इधर corner में selected families को देखे, इधर you will get the link. Simply copy link and paste in your head section. Then there will be guide how to add the property name.